Good morning, students. Okay, in previous class, we have studied about some parameters related to congestion control in TCP. Okay, we continue with that particular topic, which is the congestion control. Okay, the congestion control mechanism include basically three phases. Okay, that is slow start and exponential increase, slow start and exponential increase. Okay, then congestion avoidance phase, which includes additive increase, and then congestion detection phase. Clear? So we continue with that portion. In previous class, we studied about what is the meaning of slow start and exponential increase. Okay, slow start and exponential increase is this type of phase identifies the congestion window. Basically, the term congestion window means number of segments, the buffer, the size of the buffer initialized by the server, and the congestion window which is imposed by the network onto the processes, the size of the or the capacity of the network. That means how much the network is capable to transmit the data packets or segments. Okay, this is known as congestion window. So the congestion window, it is necessary to fix the size of the congestion window. Clear? Why it is necessary to fix the size of the congestion window? Because mm, at whenever the network administrator design any type of network, it is necessary to define the capacity of the network. That's why the congestion window or the size of the congestion window is defined by the administrator. Clear? So in slow start and exponential increase phase, uh, each and every sender process decide the size of congestion window. It initially it starts sending the first segment, and then gradually it increase or exponentially it increase the congestion window. That means initially it starts sending the one segment. After receiving the acknowledgement of the previously sent segment, it starts sending two segments and then four, and then in this way it exponentially increase the congestion window size. That is the slow start exponential increase phase of the congestion control mechanism in the TCP. So any type of buffer space or congestion window or the sliding window should define some threshold value. Okay, limit of the congestion window should be decided by the sender process or any type of processes which send the segments. Clear? Now, in second phase, which is the congestion avoidance phase, that means whenever it reaches to some threshold value, the congestion avoidance phase comes of a specific processes. In that particular avoidance phase, it not exponentially increase the transmission of the segment. Basically, it send the segments according to the additive increase part of the congestion window. That means whenever it starts sending one segment, afterward it sends two segment, then three, then four, then five, and so on. So this is the additive increase phase, not exponentially increase the congestion window size. It only additive transmission is possible in case of congestion avoidance phase. Whenever the congestion avoidance phase comes under the picture of TCP transmission, at that particular time the threshold value should also decided by the TCP processes. Clear? So these are the two phases of the congestion control. Okay, slow start and exponential increase, then congestion avoidance, that is additive increase. Clear? Which is discussed in previous class also. So in the congestion avoidance algorithm, the size of the congestion window increase additively until congestion is detected.
What is the condition here? That is the uh, congestion window increase additively until the congestion is detected. Okay, so the third phase is congestion detection phase. Okay, the congestion detection phase is basically uh, after that particular congestion avoidance phase. Okay, some specific points should be clear with this congestion control mechanism, because threshold value in any type of window size should be defined earlier. Okay, why it is necessary? Because any type of concept which is including the transmission of the segment should decide the threshold value of each and every sliding window or buffer. Okay, what is the capacity of that particular transmission process to transmit the segment? Clear? So here we use two terms, that is SS threshold, which specifies slow start threshold. Clear? Slow start threshold. See the summary report related to the congestion policies. The congestion policies include basically starting of the transmission, then congestion avoidance phase, and then the congestion detection phase. Clear? So here we use a concept which is known as slow start threshold. That means whenever a TCP process is in under the first phase, it should define the threshold value of the slow start phase, that is exponential increase phase. Clear? Here there are two basic terms, that is the congestion window and slow start phase. See that whenever any particular TCP process wants to communicate with other, it sends the connection establishment request, then it establishes the connection, and then particular transmission would be started. How it is started? It sets the size of the congestion window. That particular congestion window size should be less than the threshold value. Okay, how much the particular first phase increase the segment transmission exponentially, it is depending upon the threshold value of the slow start phase. Clear? So if the size of the congestion window is greater than the slow start threshold value, that means that particular first phase is over. Now the TCP process or the transmission between the TCP process comes under the congestion avoidance phase. That means it may be possible if that particular congestion window size is increased now, so the particular segment transmission should not be successful because of the threshold value increases. Okay, so it is necessary to decrease the size of the congestion window. Okay, so this particular phase is known as congestion avoidance phase. Clear? See the previous slide. See, this is the congestion avoidance phase, in which the TCP processes start sending the first segment, then gradually increase the size of the congestion window. That is, afterward it sends two segments, then three, then four. This is known as additive increase. Clear? Now come to again this particular slide, that is slow start phase. This slow start phase continue until the size of the congestion window is less than the threshold value decided by the network. Clear? If the threshold value or the congestion window size is increased or is greater than the threshold value, in that case it should stop the exponential increase of the segment transmission. It comes to the congestion avoidance phase, which include the additive increase. Clear? So what is the part of that congestion avoidance? In congestion avoidance, the congestion window size increase gradually, okay, additively. Here, after the congestion avoidance phase, it may be possible that the capacity of the network should increase the threshold value. So there are two possibilities, that is timeout, that is segment received by the destination or the segment sent by the sender is not received by the destination successfully within the specified timeout period, which is known as timeout constraint. Okay, whenever the timeout constraint or timer goes off for a particular segment, that particular segment
may be discarded or lost in the transmission. It is the one case. Now the another case is uh, received three acknowledgement. Okay, three consecutive acknowledgement for the same segment. What does it mean? That means the segment sent by the specific sender process, okay, is not received by the destination successfully, so it is waiting for that particular segment. It sends the acknowledgement for that particular segment in a specific time duration. Okay, when the timer goes off, it again sends the same acknowledgement for the particular segment in that particular timer, or in that particular time out time wait period. If it does not receive the segment, it again sends the same acknowledgement. So whenever a sender receives the three consecutive acknowledgement for the same segment, that means it may be possible that the segment can be lost during the transmission. So this particular phase is now known as congestion detection phase. These are the two parameters or two conditions which identifies that the congestion detection phase, now the congestion detection phase comes under the picture, because either the timeout is considered, or either the three acknowledgement messages are received by the specific sender process. So in that particular case, what does the TCP process, what is the condition to the that particular TCP process? That the threshold, either if it timeout condition is identified, in that particular case the slow start threshold value, okay, is equals to half of the window size. What does it means? Any TCP process equipped with a circular array buffer, okay, whatever the size of the window should be decided earlier. After that congestion detection phase, in case of timeout timer, the threshold value or the slow start threshold value is equals to the half of the window size now. Okay, so if the window size is 8 in starting, if the window size is 8 in the congestion detection phase, it should be decreased by half. Okay, so in this case the threshold value should be half of the window size. Clear? Now what is the congestion window? The congestion window size is only one segment. Okay, here after deciding the congestion window in congestion detection phase, it again come to the first phase, which is the slow start phase, because any TCP process identifies the congestion or detect the congestion. So the responsibility of the TCP process is of after detection, it basically it slow down the speed of the sending process. So for that particular reason, it should decide the threshold value again and decide the window size. Okay, depending upon the window size, it decide the threshold value of the slow start phase and the size of the congestion window. So it again come to the first phase, which is the slow start phase, and again it transmitting the segment in an exponential increase phase, and then again it come to the congestion avoidance and congestion detection. Clear? This is related to timeout. Clear? But if the condition arises that it receives the three consecutive acknowledgement for the same segment, it shows that the segment transmission or the segment sent by the sender is discarded or destroyed during the transmission due to the congestion. So it is the identification of the congestion. Here in that particular case, the threshold value is decided as a half of the window size, but the congestion window is equals to the threshold value. Okay, that means half of the window size. So the size of the congestion window is different in two different cases. Either it is the condition of timeout, or either it is the condition of three acknowledgement received. Clear? In both the cases, the congestion detection phase comes in the picture. So the function of the
any sending process is deciding the congestion window size again and start the process from the slow start phase. Clear? After the congestion detection or circulating the specific type of slow start and exponential increase phase, and again the again come to the congestion avoidance phase. So this is the continuous process. Clear? After the complete transmission, it may be possible that the connection should be terminated normally or by any type of process, either sender or the receiver. If these two processes are only peer entity processes, so anyone can terminate the connection. But if the client server communication takes place, so only the server can have right to terminate the connection by sending the finish to statement. Clear? So this is all about the congestion control phase. Okay. We hit. Now we come to the next slide. This is the explanation of the congestion control with the help of example. So it is the slow start phase with exponential increase. When it identifies the second phase, which is the congestion avoidance phase, it uses the additive increase portion. Okay. And then if it identifies the congestion or detect the congestion, it uses the multiplicative decrease. MD stands for multiplicative decrease. That multiplicative decrease shows the size of the congestion window. Here, afterward, it's again start with the slower start, then additive increase, and then again multiplicative decrease, depending upon the timeout period or three acknowledgement received by the sender. Okay. You have to remember this particular TCP congestion policy summary. What is the meaning of slow start and congestion avoidance phase and the congestion detection? Okay. Now we have another topic in the TCP, that is TCP timers. Okay, to perform the operation of the TCP smoothly, most TCP implementation use at least 4 timers. It is the necessary part of the TCP processes. That is why it is necessary, because TCP is a reliable protocol, or we can say that connection oriented protocol and reliable protocol. So to provide the reliability in the transmission, it uses some timer mechanism. Okay, so the TCP processes divided its timer in 4 different categories. Okay, the name of the timers are retransmission timer, then persistence timer, keep alive timer, and time wait timer. Clear? Retransmission timers, that means if a sender send the segment and start the timer after expiration or before the expiration of the timer, if the destination send the acknowledgement and that particular acknowledgement is received by the sending process, this particular timer is known as retransmission timer. That means after how much time the specific lost segment should be retransmitted by the sender. It is depending upon the retransmission timer. Okay, so whenever a sender start transmitting data, it sets the timer for a particular segment, and before expiration of that particular timer, the acknowledgement for that segment should be received by the sender. Okay, uh, but in any case, if the acknowledgement is lost or the segment is lost, in both the cases the particular timer goes off, and it restart the timer again for the retransmission of a particular segment. Okay, so that's why this particular timer is known as retransmission timer.
रीट्रांसमिशन टाइमर को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक पहला सेगमेंट ट्रांसमिशन के लिए है सेंडर के पास, तो अगर इसने 10 मिली सेकेंड का टाइमर सेट किया है, ओके, अगर 10 मिली सेकेंड का टाइमर सेट किया है और टाइमर सेट करने के बाद उसने सेगमेंट सेंड कर दिया, और अगर डेस्टिनेशन ने सेगमेंट रिसीव कर लिया सक्सेसफुली विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इंटीग्रिटी लॉस, सो इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट, वो अपना एक्नॉलेजमेंट पोर्शन या एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट ट्रांसमिट कर देगा, और विद इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है, so the segment is successfully received by the destination. This is the identification. But अगर किसी केस में या तो सेगमेंट लॉस हो जाता है या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाता है, तो टाइमर वहीं स्टॉप होके, क्योंकि टाइमर एक्सपायर हो गया, टाइमर एक्सपायर होने के बाद अब टाइमर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा सेंटर साइड पे कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और टाइमर आपका स्टॉप हो गया, तो टाइमर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और फिर से वो रीसेंड करेगा उस सेगमेंट को. That's why this particular timer is known as retransmission timer. Clear? Now the next is persistence timer. What is the role of persistence timer? बेसिकली ये टाइमर इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई रिसीविंग प्रोसेस अपना अगर जीरो विंडो साइज एडवर्टाइज करता है, ओके, सो हाउ दिस पर्टिकुलर जीरो विंडो साइज इज, जीरो विंडो साइज को जो सेंडर प्रोसेस है वो कैसे डील करेगा, ओके, और जीरो विंडो साइज के बाद कब वो नॉन जीरो विंडो साइज एडवर्टाइज करेगा, ओके. सो उसके लिए परसिस्टेंट टाइमर का क्या रोल है बेसिकली, कि अगर कोई भी सेंडर प्रोसेस आपकी, ओके, अगर किसी सेंडर प्रोसेस ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब डेस्टिनेशन प्रोसेस जो कि टीसीपी प्रोसेस है, अगर वो अपना डेटा सेंड करती है बाय एडवर्टाइजिंग इट्स विंडो साइज, ओके, remember the segment structure of the TCP in which the window size is defined by the any process, okay. बट अगर डेस्टिनेशन अपना विंडो साइज एडवर्टाइज करती है, बट वो विंडो साइज क्या है आपका, जीरो विंडो साइज है, व्हाट डज इट मीन्स कि सेंडर को अपना ट्रांसमिशन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि रिसीवर के पास कैपेसिटी नहीं है डेटा रिसीव करने की. क्लियर? सो ये जीरो विंडो साइज का एडवर्टाइजमेंट क्या है, रिसीवर के पास कितना कैपेसिटी है डेटा को रिसीव करने का, ओके. तो ये जो रूल है या ये जो विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट है जीरो विंडो साइज, ये फॉलो करना पड़ेगा सेंडर को, दैट इज द रूल. It should obey the rule defined by the destination regarding the window size. Clear? तो सेंडर अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर देगा, ओके, बट कब तक स्टॉप रखेगा वो, अगेन जो आपका रिसीविंग प्रोसेस था उसे अपना विंडो साइज नॉन जीरो विंडो साइज एडवर्टाइज करना पड़ेगा, यानी एक ऐसा सेगमेंट सेंड करना पड़ेगा जिसमें वो अपना विंडो साइज एडवर्टाइज करे. क्लियर? तो जब डेस्टिनेशन प्रोसेस या कोई भी रिसीवर प्रोसेस अपना नॉन जीरो विंडो साइज अगर एडवर्टाइज करती है, बट ये जो नॉन जीरो विंडो साइज वाला जो सेगमेंट है अगर ये लॉस हो जाता है, ओके, तो इस केस में जो आपका प्रीवियस जो सोर्स था जो वेट कर रहा था कि जो एक्नॉलेजमेंट में अगर मुझे विंडो साइज एडवर्टाइज हो जाए तो मैं अपना सेगमेंट ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जो नॉन जीरो विंडो साइज वाला सेगमेंट था वो आपका लॉस हो गया ट्रांसमिशन में. इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका सेगमेंट लॉस हो सकता है, तो उस केस में दोनों ही जो प्रोसेस होगी वो डेडलॉक में चली जाएगी. कैसे? कि जो आपका रिसीवर प्रोसेस था उसने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है बाय सेंडिंग दी नॉन जीरो विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट, क्लियर, बट जो आपका सोर्स था जो ईगरली वेट कर रहा था कि बफर साइज एडवर्टाइज करे और उसके बाद में ट्रांसमिशन स्टार्ट करूं, उसने वो नॉन जीरो विंडो साइज वाला सेगमेंट रिसीव नहीं करा, तो ये वेट कर रहा है कि कब मैं नॉन जीरो विंडो साइज वेट रिसीव करूं. तो दोनों ही कौन सी सिचुएशन में चले गए, डेडलॉक में. तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो भी आपका रिसीवर है जब भी जीरो विंडो साइज एडवर्टाइज करता है और जो आपका सेंडर था जिसने जीरो विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट रिसीव करा है सामने वाली पार्टी से, वो क्या करेगा, अब एक टाइमर अपनी साइड पे स्टार्ट कर लेगा जो ये शो करेगा कि उसने किस पर्टिकुलर मोमेंट पे जीरो विंडो साइज सेगमेंट वाला उसने एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करा था. क्लियर? तो जब ये टाइमर अपनी साइड पे स्टार्ट कर लेगा और उस टाइमर के एक्सपायर होने तक अगर नॉन जीरो विंडो साइज का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो वेल एंड गुड, डेडलॉक सिचुएशन आपकी अवॉइड हो जाएगी. बट अगर टाइमर ऑफ हो जाता है और नॉन जीरो एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है आपका अपोजिट साइड से, दैट मीन्स वो नॉन जीरो विंडो साइज वाला जो एडवर्टाइजमेंट है या जो वो सेगमेंट है वो आपका लॉस हो गया है.
तो ये आइडेंटिफिकेशन है सेंडर को कि इस ड्यूरेशन में अगर ये सेगमेंट रिसीव नहीं हुआ एडवर्टाइजमेंट, तो मुझे अब एक ऐसा प्रॉप सिग्नल सेंड करना पड़ेगा अपनी साइड से, ताकि डेस्टिनेशन को पता चले कि आपका नॉन जीरो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट लॉस हो चुका है, तो यू शुड सेंड अगेन। क्लियर? So what is the reason of persistent timer? That is to avoid the deadlock situation between the sender and the receiver TCP processes. It should use the persistent timer at the sender side. Okay, clear? Now we come to the keep alive timer. What is the meaning of keep alive timer? That keep alive timer, that means मैं alive हूँ अभी तक। ओके, व्हाट डज इट मीन्स? जैसे अगर कोई क्लाइंट प्रोसेस है आपकी, उसने अगर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, डेटा ट्रांसमिशन फेज आपका स्टार्ट हो गया है दोनों के बीच में, उस केस में जो क्लाइंट प्रोसेस है अगर कुछ डेटा सेंड करके आइडल हो जाती है, मतलब अब वो कुछ समय के लिए आइडल है, वो अब कोई ट्रांसमिशन नहीं कर रही है, ओके, तो सर्वर प्रोसेस कितने टाइम तक वेट करेगा किसी क्लाइंट प्रोसेस से डेटा रिसीव करने के लिए? ओके, सो आफ्टर basically there is a specific fixed time period for the keep alive timer or for server process, at how much time or for how much time the server should wait for the uh, client transmission. Okay, so ये time period क्या है आपका, कि अगर client कुछ transmission करके अपनी साइड से ट्रांसमिशन ऑफ कर देता है, या किसी भी कारण से जैसे क्लाइंट प्रोसेस आपकी शट डाउन हो जाती है या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है, तो उस केस में सर्वर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर्वर इज वेटिंग फॉर डेटा फ्रॉम द क्लाइंट साइड और कम्युनिकेशन फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स तक ये सर्वर प्रोसेस वेट करेगा क्लाइंट साइड से डेटा रिसीव करने के लिए। बट अगर 2 आवर्स तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है क्लाइंट साइड का, तो इमीडिएटली कनेक्शन ऑफ नहीं करेगा, है ना, कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करेगा इमीडिएटली, वो एक स्पेसिफिक प्रॉप सिग्नल भेजेगा। ओके, द प्रॉप सिग्नल इज नोन एज अ कंट्रोल सिग्नल, दैट पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल इज सेंड बाय द सर्वर प्रोसेस टू द क्लाइंट। ओके, और ऐसे एक प्रॉप सिग्नल नहीं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक 10 प्रॉप सिग्नल्स जो है वो सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे जाएंगे। हर एक प्रॉप सिग्नल 75 सेकेंड्स अपार्ट होगा, दैट मीन्स हर एक प्रॉप सिग्नल के बीच में जो गैप रहेगा दैट इज 75 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसे 10 प्रॉप सिग्नल भेजने के बाद भी अगर क्लाइंट साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता है, और उस केस में फिर ये आइडेंटिफाई करेगा सर्वर कि जो क्लाइंट प्रोसेस है वो अलाइव नहीं है। ओके, तो ये जो कीप अलाइव टाइमर है दैट इज इक्विप्ड एट दी सर्वर प्रोसेस। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन है ओनली कि जो हमारी क्लाइंट प्रोसेस है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये कनेक्शन को कब टर्मिनेट कर पाएगा सर्वर, ये टाइमर आपका कहलाता है कीप अलाइव टाइमर। क्लियर? Last one timer is the time wait timer. Okay, remember the different stages of the TCP processes or different state of the TCP processes. Okay, उस स्लाइड पे चलते हैं। See, that is the common scenario between the client process and server process. ये वो आपकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है जिसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वेट टाइमर। ओके, व्हाट डज इट मीन्स टाइम वेट टाइमर? टाइम वेट टाइमर एक ऐसा टाइमर है जिसमें जो कनेक्शन टर्मिनेशन फेज में यूज किया जाता है। ओके, कनेक्शन टर्मिनेशन फेज का मतलब है कि अगर कोई क्लाइंट प्रोसेस कोई फिनिश स्टेटमेंट सेंड करती है, ओके, और सर्वर प्रोसेस उस फिनिश स्टेटमेंट को रिसीव करके उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देती है, और अपनी साइड से एक फिनिश स्टेटमेंट सेंड करती है, फिनिश सेगमेंट सेंड करती है। तो उस केस में क्या होगा आपका, कि जैसे ही इस फिनिश स्टेटमेंट जिस क्लाइंट प्रोसेस ने रिसीव करा है वो अपनी साइड पे एक टाइमर स्टार्ट करेगी, दैट पर्टिकुलर टाइमर इज नोन एज टाइम वेट टाइमर। वो टाइम वेट टाइमर क्या है कि उस टाइम पीरियड में जो एक्नॉलेजमेंट आपका क्लाइंट प्रोसेस सेंड कर रहा है सर्वर प्रोसेस को, वो सर्वर प्रोसेस रिसीव कर ले।
ओके, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो ये क्लाइंट प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, सो क्लाइंट प्रोसेस किस स्टेट में चली जाएगी, वो क्लोज स्टेट में चली जाएगी। तो टाइम वेट टाइमर इज यूज फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन फेज बाय द क्लाइंट प्रोसेस। क्लियर? तो ये जो क्लाइंट प्रोसेस है वो जो टाइम वेट टाइमर सेट करती है, दैट टाइम वेट टाइमर इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम टाइमर, दैट इज द अनदर नेम ऑफ टाइम वेट टाइमर। क्लियर? so these are the different four timers related to TCP. Okay, क्वेश्चन आता है कि what are the different timers used by the TCP processes. So कौन कौन से टाइमर्स हैं आपके? retransmission timers. You should explain these timer with the help of example, timeline example. Okay, retransmission timer, then persistent, keep alive timer, and time wait timer. Clear? Now these are some topic related to TCP. The topic which we have covered are flow control, congestion control, TCP timers, TCP segment structure. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि TCP टाइमर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रिलेटेड टू कंजेशन कंट्रोल में, या जो अपन ने फ्लो कंट्रोल में सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम पढ़ी है, तो सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मीन सिली विंडो सिंड्रोम एंड व्हाट आर दी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। Okay. Now we have some reliability mechanism provided by the TCP, which we are knowing as a error control mechanism. Okay, what does it means error control? That means if the segment received by the destination is duplicate segment or corrupted segment or out of order segment received by the destination, okay, or the segment is lost during the transmission. So these different issues are the part of the TCP reliability. Okay, because TCP is the connection oriented protocol, so it provides the reliable services. So to provide the reliable services, it uses different mechanism of error control. That particular error control mechanism uses like checksum calculation, which shows the particular segment is corrupted or not. Okay, to check the integrity of the data, the TCP processes use the checksum processes. Okay, uh, for successful arrival of the specific segment, it uses the acknowledgement mechanism. Okay, uh, to show that the segment is destroyed or lost during the transmission, it uses the retransmission timer. Okay, or specifically it uses the buffer space at the receiving process to receive the out of order segments. Okay, this particular out of order segment is similar to like we use selective repeat ARQ protocol at data link layer, in which the sender and receiver's buffer size is similar here. So sender or receiver equipped with some specific buffer management system. Now what are some issues related to error control? It is a normal operation which shows the segment transmission, receiving of the segment by the server, send the acknowledgement segment, start the timer again. Before the timer goes off, it receives the acknowledgement from the other party. This is the normal situation between the two processes, okay, client and server processes. But here it is the case where it receives the where it founds the segment is lost during the transmission. So how would the particular sender knows about the segment loss? That is, it uses the retransmission timer at its side. Okay, whenever it starts sending the segment, it sets a specific timer which is known as retransmission timer. Okay, this retransmission timer has a specific value. Okay, so it starts sending the segment, but that particular segment is lost. In that case, it should retransmit the segment again. Okay, so these are the situation where the segment is lost and the acknowledgement is lost. So
अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस है तो रिसीवर को क्या करना है, अगर सेगमेंट लॉस है तो रिसीवर को क्या करना है। ठीक है, तो करप्टेड सेगमेंट है तो उसे कैसे रिक्वेस्ट करेगा रीट्रांसमिशन की, वो चेकसम कैसे कैलकुलेट करेगा, तो ये सारी प्रोसेसेस वो रिलायबिलिटी मैकेनिज्म में यूज करता है एक्चुअली टीसीपी आपका। ठीक है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ओके, जिसमें अपन ने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेजेस पढ़े हैं, डेटा ट्रांसफर फेज पढ़ा है और कनेक्शन टर्मिनेशन और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टीसीपी।